so far whatever we have covered, right, जहाँ भी हमें cover करिचे Docker ऊपर, so जितने भी हमें container create करचे सब हम कौन inbuilt image use करिके container create करचे, right? तो आज क्लास हमें discussion करिबा केमती हमें निजर गोटे image हमें create करि परिबा, right? तो जितने तुम कंपनी रे काम करिवो, right, कोनी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करिवो तो Docker रे काम करूचो, then you have to write your own image. So first you need to understand, right, why should we build our own image, right? What is the requirement? Why it is required, right? You need to understand first. So in this class, we'll discuss more about how we can write a Docker file to create our own image by building it. Okay, so first understand what is a Docker file, and then हमें इमेज केमती क्रिएट करिबा, also इमेज केमती ताको यूज करिकरी केमती कंटेनर क्रिएट करिबा. ओके, सो हमें जानिचे कोन इमेज गोटे कोन, what is the image, what is a Docker image? Docker image is nothing but an instruction or a template which consists of the codes which is required for the container, the applications to run, right? तो हमें मतलब गोटे इमेज को यूज करिबो, तो इमेज कोन होची, the instance of the Docker, right? I mean image use करिकरी कोन कंटेनर क्रिएट करि परिबा. तो हमें कोन करिया, इमेज होची गोटे ऑब्जेक्ट जोटा कि बिल्ड टाइम ऑब्जेक्ट, आउ कंटेनर होची कोन गोटे रन टाइम ऑब्जेक्ट, राइट? दुईटा ऑब्जेक्ट विषय हमें जानितले स्टार्टिंग रु. तो इमेज आउ कंटेनर, सो जो बिल्ड टाइम ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हबो ड्यूरिंग द build time, when we build the Docker file, that image will get created, right? So chalo dekhiye Docker file kaun actually. So a Docker file is a text document that contains all the commands a user could call on the command line to assemble an image. It's very simple, but a single statement hame kaun kaiba, a Docker is a text document, a simple text document that contains all the commands a user could call on the command line to assemble an image. So jitla हम ओडी image create करिबा, right? तापे हमो किछि कोड लिखिबा पड़िबो. So कोड कोन लिखिबा पड़िबो, जो कमांड कोन लिखिबा पड़िबो ना, हम गोटे एप्लीकेशन, राइट, गोटे एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय करिबा बा रन करिबा, तापे जहा जहा सब कमांड्स दरकार, राइट? से सब कमांड्स को हमें कोन करिबा, गोटे टेक्स्ट फाइल रे बा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रे लिखिबा, से फाइल को हमें यूज करिबा इमेज क्रिएट करिबा पड़ी, राइट? सो बहुत सिंपल भाषा देखियो, a Docker file is a script containing a set of instructions to build the Docker image. So what says, a Docker file is a script containing a set of instructions, the same if you see this one and this one, completely same, right? What it says, it contains all the commands a user could call, right, on the command line. The same thing says script. Script is nothing but the list of commands, right, which we can use to assemble an image. So how the image gets created, the Docker daemon runs the instructions in the Docker file one by one. So जेतबे Docker file हमें लिखिबा, right, image create करिया पई जहां भी instructions अछि 1 2 3 4, right, गोटे Docker file रे सब जाक instructions कोन हबो one by one कोन हबो, एक Docker daemon द्वारा कोन हबो दा रन हबो. तो रन हला पर जहां भी रन हला सेटा कोन होची, जेतबे हमें असेंबल करिबा, जो पैकेज करिबा, सो रन हेकरी तो फाइनल रिजल्ट कोन हबो, गोटे इमेज क्रिएट हबो. Final image, final file, final product कोन हबो, गोटे image, right? Final result image, committing the result of the each instructions to a new image. So before final outputting at the outputting the ID of a new image. So जेतबे हम new image गोटे क्रिएट करिबा, so सबु केस रे जते भी तमे इमेज क्रिएट करूछ, राइट, सबु बेले कोन हबो, न्यू इमेज आईडी, यूनिक इमेज आईडी क्रिएट हबो, राइट? So whenever possible, Docker will reuse the intermediate images, that is called cache, to accelerate the Docker build process significantly. So ये जो statement हमें देखुचे, एटा कोन होची ना, जेते बळे दरकार
तो डॉकर कौन करबा ना जहां भी डॉकर फाइल हमें फर्स्ट सपोज गोटे डॉकर फाइल हमें बिल्ड करिचे से डॉकर फाइल बिल्ड हबा परे हम कौन दरकार सपोज हमें आउ गोटे किछि इंस्ट्रक्शंस सपोज ऐड करिया को चाहूचे राइट तो से इंस्ट्रक्शंस जो ऐड करिवे से इंस्ट्रक्शन कोन होची 1 second guys let me open the जहां भी सब इंस्ट्रक्शंस फाइल रे रहउची राइट तो हमें धरो फर्स्ट गोटे इमेज जहां भी इंस्ट्रक्शंस लिखिचे 10 लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ताको बिल्ड करले तो से कोन होबो ना गोटे इमेज क्रिएट करियो राइट सपोज हम से इमेज यूज लबे किछि मॉडिफिकेशंस दरकार तो हमें आउ 2 लाइन कोड बा इंस्ट्रक्शन ऐड करले तो सेते कोन होबो ना हमर इमेज से आउ दीटा लेयर आड़े जो हेटा कोनती इमेज लेयरिंग ओके इमेज लेयरिंग तो हमर दीटा इमेज लेयर आड़े जो सपोज मु जदी गोटे इमेज फर्स्ट कली गोटे डॉकर फाइल लिखिली ओके सपोज ए डॉकर फाइल रे जेटा पांचटा लाइन अछि पांचटा लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अछि ओके एंड जेतले आकु मु बिल्ड करबी राइट जेतले आकु मु ए डॉकर फाइल को मु बिल्ड करबी से कोन बोटे इमेज क्रिएट करिवो राइट इट विल क्रिएट वन इमेज सपोज इमेज वर्जन 1.0 टैग दे देली मु वर्जन 1.0 तो से मते नेक्स्ट टाइम किछि रिक्वायरमेंट चेंजेस हला तो मते कि इमेज रे चेंजेस करिवार अछि तो मु कोन कली आउ दुईटा लाइन सपोज ऐड कली बा किछि लाइन सपोज मॉडिफाई कली तो मॉडिफाई कर साला पर कोन मते एटा को मते रीबिल्ड करिया पड़िबो ए डॉकर फाइल टाको मते रीबिल्ड करिया पड़िबो रीबिल्ड बा बिल्ड करिया पड़िबो राइट तो रीबिल्ड कला पर कोन हो से आउ गोटे इमेज क्रिएट करियो डिफरेंट वर्जन सपोज वर्जन 1.1 आर आईडी डिफरेंट आर आईडी भी डिफरेंट हो तो हमें जो कहतला जो रीकैसे जो कैसे राइट कैसे कोन ना तो फर्स्ट तो बिल्ड कोची जो पांचटा कंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन को नै की राइट से जो फर्स्ट बिल्ड रो जहां भी बिल्ड हेची इंस्ट्रक्शन सेटा कोन कैसे रे बा मेमोरी रे स्टोर हेकी रहिथिबो इमीडिएट कैसे रे राइट तो से नेक्स्ट टाइम हमें तो रीबिल्ड करिवा से कोन करिवो ना आउ थरे आकु आउ से बिल्ड करिवनी से कोन करो डायरेक्ट कैसे रो उठे दबो पांचटा लाइन को उठे दला परे आउ जो दुईटा लाइन हमें ऐड करिचे से दुईटा लाइन को से बिल्ड करियो तो टोटल रीबिल्ड रे टोटल फाइल को बिल्ड करी से कोन करियो आउ उठे इमेज करतो तो एठी कोन होबन जे तो पांचटा लाइन ऑलरेडी बिल्ड हेची तो कैसे रो से उठेल त माने कोन हमर बिल्ड फास्टर हे जिवो कंपेयर टू द इनिशियल बिल्ड राइट फर्स्ट जो बिल्ड हम करथि ता अपेक्षा हमर सेकंड बिल्ड फास्ट हे जिवो राइट सही कथा लिखि छी build process significant accelerate the docker build process significantly right eta to ame bujile tar definitions kon mane docker file kon how image kemti create habo right tar docker file kon विषय ame janile right ame ebe dekhiba docker image ame kemti build kariba kotu docker file ru ओके आ गोटे मन रखिता डॉकर फाइल सब बेले हमर कोन कहलो तनार लिखाई थो डॉकर फाइल डी सब बेले थिबो कैपिटल नॉर्मल डॉकर फाइल नो एक्सटेंशन नथिंग तो फाइल ना तुम केवल लिखिबो डॉकर फाइल डी कैपिटल ओ सी के ई आर एफ आई एल ई डॉकर फाइल ओके सिंपल टेक्स्ट फाइल no extensions no YAML no JSON nothing okay simple text file text extension तबा दरकार भी नहीं तबे खाली docker file हिसाब खाली नाटा तब तार docker file okay तो लेखि साइला पर कोन करबो तार इंस्टेंस मु बते देबी नेक्स्ट ताको लेक्स देखो एटा गोटे सैंपल एग्जांपल्स देछि कोन फ्रॉम bgbox कॉपी ई सब कोन ला कमांड डॉकर फाइल रो कमांड ता विषय में डिस्कशन करे कोन कमांड हमें यूज करि परिबा राइट ता विषय में डिस्कशन करिबा तो एटी देखो जस्ट सिंपल 4 लाइन रो इंस्ट्रक्शंस अछि फ्रॉम bgbox कॉपी गोटे स्क्रिप्ट कॉपी करछि कोडी की var डायरेक्टरी को वर्किंग डायरेक्टरी var ए स्क्रिप्ट को मु रन करूछि बहुत सिंपल राइट सेम आ गोटे 5 लाइन रो एटी इंस्ट्रक्शंस लिखाई छी एटा भी आ गोटे डॉकर फाइल जोता कि हमें टॉमकट इमेज गोटे क्रिएट करूचे तो बेस इमेज आउछि फ्रॉम जोटा हमर बेस इमेज फाइन यूज करा हुए राइट तो कोन होछि ना जते बळे
आमे बिल्ड करिबा कोन होची ना डॉकर रन्स इंस्ट्रक्शंस इन डॉकर फाइल इन ऑर्डर गोटे ऑर्डर रे से रन हो जेंदी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव sequentially one after another one by one it will execute. So a docker file eta mon rakhitao a docker file must begin with a from instructions जोटा कि आमे ताकू कहूचे base image रू ही start up. Okay, a docker file must begin with a from instructions जे कोनसी गोटे base image ऊपर ही आमे हमरा image create करिबा. Okay, तो ता पई हमरो रेफरेंस फाइल अच्छी तुमको देखा देवी डॉकर ये जो कमांड सब यूज है राइट फ्रॉम ऐड एक्सपोज वर्किंग डायरेक्टरी सीएमडी कॉपी राइट ये सब कमांड्स तुम्हें कोठी पाइबो केमिति तमे लिखिबो राइट कंप्लीट डिटेल्स रे हमें जानिबा आ गुटे हला कोन तेटा जानि सला परे हमें केमिति बिल्ड करी डॉकर इमेज बहुत सिंपल कमांड नथिंग एल्स खाली ई डिफरेंट वे रे हमें बिल्ड करि परिया खाली तारा इमेज हला डॉकर बिल्ड कमांड है docker build a new versions docker image build ओके एटा हम देखिबे केमती यूज करिबा बट ता पूर्वरु हम देखिबे docker file हम केमती लिखिबा ओके हाउ वी कैन राइट द docker file लेट्स सी तो तबे तमे docker reference गोटे अछि ओके तमे कोन जीवना docs.docker.com reference docker file just simple Google कर दो तमें ओके docker file reference ओके तो फर्स्ट तुमको मिल जिवो docker reference complete list of commands जोटा बर्तन मोइट ओपन करतली राइट तो docker file reference रे कोन होची तुमको लिस्ट ऑफ कमांड्स तुमको जहां दरकार बड़े इमेज क्रिएट करिवा पई सब डिटेल्स रे तमे पाइ जिवो देखो कौन सब instruction details add arg cmd these are the instructions or we can say the commands okay commands or instructions so we can find this add arg cmd copy entry point label just देखो एति की सब तुमको यूज करिया पड़ियो कोडी तमरा डॉकर फाइल रे तार कंप्लीट डिटेल्स तुम जदी क्लिक करबा ऐड ऊपर देन ऐड केमिति यूज करा हबो ता विषय कंप्लीट डिटेल्स दे देछि कंप्लीट डिटेल्स तो तुमको इजी हम यूज करे तार जो एग्जांपल सब अछि गोटे गोटे जो छोट छोट एग्जांपल्स अछि हमें निजे हमर एटा इमेज क्रिएट करबा तो से इमेज क्रिएट करले कोन सब कमांड्स दरकार से कमांड रा यूसेज कोन मु तुमको पूरा कंप्लीट डिटेल्स रे बतै देबी ओके सो हमें एबे कोन करबा ई पर्टिकुलर जेमती हमें लिंक देखि के हमें काम करू चाहिए तो ये पर्टिकुलर तो ये लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड रे भी तुम देखिबो आर डिटेल्स सब देई छी ओके यदि मैं को जस्ट मूव करूची देखो रन कमांड एटी भी हमें देखि तले कोन रन कमांड गोट अछि एग्जीक्यूट बिल्ड कमांड्स किछि भी कमांड को बिल्ड करिवार अछि बा तमे एग्जीक्यूट बिल्ड कमांड्स तो ऐड लोकल और रिमोट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज और कंप्लीट डिटेल्स में इनपुट भी एटू भी पाई परिबो तो फ्रॉम एला कोन क्रिएट ए न्यू बिल्ड स्टेज फ्रॉम ए बेस इमेज तो गोटे बेस इमेज रू ऑलरेडी गोटे इमेज थिबो से इमेज रू ही तुमको गोटे नेगरी कोन इमेज क्रिएट करिया पर सेटा बेस इमेज को आजे तो फ्रॉम तमे गोटे स्टार्ट करिवा पर भाई हम गोटे किछि बेस दरकार हम राइट किछि गोटे बेस दरकार तो एबे देखो a simple think about the pizza the pizza हमें जो बनौछे राइट तो पिज्जा स्टफिंग दबा को हेले हम गोटे पिज्जा बेस दरकार राइट ता ऊपर हमें जे कोनसी पिज्जा हमको दरकार तार कंप्लीट स्टफिंग हम रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमें तुल पाई कागो चिकन पिज्जा दरकार का पनीर पिज्जा की मशरूम पिज्जा में डिफरेंट वेराइटीज पिज्जास जो अछि जहां भी दरकार ता ऊपर हमें बेस जो रहिला बेस ऊपर हमें कोन डिजाइन करि पारि स्टॉपिंग टा ऐड करी कि हमें कंप्लीट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करी कंप्लीट पिज्जा बने परिबा तो सिमिलरली हमें जो कंटेनर बनौछे राइट तो कंटेनर में बनेबार हमर रिक्वायरमेंट कोन हमर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करिबा तार रिक्वायरमेंट कोन रहउछि एप्लीकेशन रन होबा पई कोन बाइनरीज बा लाइब्रेरीज दरकार कोन फाइल कॉपी करियर अछि एप्लीकेशन कोड कॉपी करियर अछि कोड आनिबार अछि ता पई कोन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करियर अछि ता पूर्व सब जाक सब इंस्ट्रक्शंस को कोन करिबा ना हमें डॉकर फाइल ले लिखि दबा लिखि देकरी से डॉकर फाइल को हमें तो बिल्ड करिबा देन दैट विल क्रिएट
our image. So ये सही image को नहीं हमें तो कंटेनर क्रिएट करिवा राइट रन करिवा तो हमर कंटेनर क्रिएट हे जो तो हम एप्लीकेशंस जहां इंस्ट्रक्शन थियो सही हिसाब रे हम एप्लीकेशंस डिप्लॉय हे जो बहुत सिंपल राइट एटा भी तबे थरे दी थरे प्रैक्टिस करि दो राइट तुमको इजी लागिवो पूरा फाइन नाउ let me show you how we can write the Dockerfile. Okay, so basically आमे first Dockerfile करिया गुरु आमे image बुझी दबा right of dot docker.com को जति जिबा आमे तुम कहितली first class रे guys तमे गोटे account करिवो कोथरे hub.docker.com right तो एठी तमरो गोटे account create करिवो तो आपका जदी करना sign up करिवो sign up कर very easy process to create it's free. Okay, just go and create an account. I already have accounts, right? I already have shown you. So without logging also you can search for the images. So the हमें किसी भी image search करिवा right? Suppose मते httpd image या फिर मते tomcat image search करिया अछि then हमें completely पाई पाइयो. तो थ्री माने जो कंटेंट टाइप ट्रस्टेड टाइप रोची डॉकर ऑफिशियल इमेज रोची वेरीफाइड पब्लिशर रोची स्पॉन्सर्ड ओएसएस इमेज तो इमेज रोची तो बेसिकली तमे जदी यूज करूछो तो डॉकर ऑफिशियल इमेज इज द ट्रस्टेड इमेज मु कहि परिबी सब बले तमे ट्रस्ट करिवो डॉकर ऑफिशियल इमेज यूज करिया पई आज योर बेस्ट इमेज. ओके एंड तमे जतबे कंपनी रे काम करछो गोटे ऑर्गेनाइजेशन पई काम करछो सेतबे तमे पब्लिकली अवेलेबल इमेज यूज करिवो नाही. ओके तो तमरो ऑलरेडी ट्रस्टेड इमेजेस राइट तमरो कंपनी बा ऑर्गेनाइजेशन रो ऑलरेडी सर्वर रे स्टोर के थिवो बजे कोनसी गोटे बाइनरी रिपोजिटरी बा जोटी तम इमेज स्टोर होची डॉकर इमेज स्टोर हेतियो सेटु तमे आनी करी तमर कंटेनर क्रिएट करिवो तो सेठु आनी कि तमे तमर डॉकर फाइल लिखिवो. ओके तो मु गोटे जस्ट एग्जांपल तुमको दे दोची बेस्ट एग्जांपल जोटा एठी अछि तो लेट्स डू दिस टू एग्जांपल्स. फर्स्ट हमें कोन करिवे ओके व्हाट इज दिस बीजी बॉक्स. ओके मु दिस स्मॉल लिखुची तो एठी मु कोन करची हमरा लेट्स सी सिस्टम docker info. Okay, तो डॉकर हमरो रन होची परफेक्टली इन्फो देखि पाइली तो मोटे जस्ट सिंपल गोटे डॉकर फाइल क्रिएट करूची आ गोटे मने रखि त तमे जतो गोटे डॉकर फाइल क्रिएट करिवो राइट यू शुड क्रिएट द डॉकर फाइल इन ए क्लीन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब कोंती हमर कोन कंटेक्स्ट एरिया कंटेक्स्ट तो माने कोन तमे जोठी भी डॉकर फाइल रखिचो सेही फोल्डर भितरे बा सेही डायरेक्टरी भितरे जहाँ भी कंटेंट रोची से सब हमें तो इमेज बिल्ड करिबा से कोन ना ऑटोमेटिकली से सब कोन रेफरेंस जीवो कोथरे इमेज दे माने इमेज दर ऐड हे जीवो ऐड हे गला कोन इमेज रो साइज त बॉडी जीवो ऑटोमेटिकली. ओके तो सेति पई तमे जतबले कोनसी रिक्वायरमेंट गोटे नेकरी कामो करूछ तमे जतबले कामो करिवो तबले मन रखि दाओ तमरे तो इमेज क्रिएट करिवो सब बेले तमे यू शुड मेक ए क्लीन कंटेक्स्ट एरिया त कोंती context. The questions definitely ask you what is context area and how the Docker works with this one. So context area माने जोटी हमर कोन Docker file जो डायरेक्टरी रे बा फोल्डर रे हमर Docker file अछि. ओके तो ए Docker file दर गोटे पाथ रे अछि कोडी सपोज मु रखिछि var abc ए फोल्डर भीतर हमर सपोज हमर डॉकर फाइल अछि तो ये जो एबीसी फोल्डर टा है गला हमर कंटेक्स्ट एरिया राइट ए कंटेक्स्ट एरिया भीतर तमे जहां भी फाइल रखिछो जते भी फाइल रखिछो से सब फाइल तमे जे डॉकर फाइल बिल्ड करछो देन इट विल ऐड टू योर इमेज. सेति पई कोन करबा ना एबीसी रे जहार जति कि हमको रिक्वायरमेंट रहउची हमर गोटे एप्लीकेशन और गोटे इमेज क्रिएट करिया पई जहां भी रिक्वायर्ड things say सब informations आ भीतर स्टोर करी रखिबो बाकी unnecessary things रखिबोनी. Okay the context area is the area where the docker file presents and it gets built from where the docker file gets built that's the context area. Now anything available right जहां भी किछि available रोची ऑब्जेक्ट कंटेंट रोची सब कंटेंट कोन होबना ऐड हे जेबो इमेज रे तो ऑलवेज मन रखिता तो हमरो जति कि स्पेसिफिक हमको दरकार
कंटेंट आम एप्लिकेशंस पे आम इमेज पे सही सब जिनस रखिबा बाकी अननेसेसरी थिंग्स विल रिमूव इट ओके तो मु गोटे कौन करी ना गोटे कंटेक्स्ट एरिया लेट मी गो अहेड एंड क्रिएट इट तो मु एबे कोन अछि एई डायरेक्टरी रे अछि कोन होम ec2 हाइफेन यूज तो मु एठी कोन कहउछि ना गोटे सिंपल गोटे डायरेक्टरी बनै दोछि ओके इनके दिया या सपोज demo image okay something called as demo image गोटे डायरेक्टरी क्रिएट कर दली ओके तो तमर प्रोजेक्ट हिसाब रे तमे गोटे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर तो एठी हमर किछि नै ब्लैंक राइट तो मु एठी डॉकर फाइल गोटे क्रिएट करबी राइट सो लेट मी राइट द डॉकर फाइल तो केमती करबी so docker file format hela it should be in capital letter d should be in uppercase right docker file no extension nothing okay so like we docker file first thing hela it have a text file right not yaml nothing right it's a simple text file so first lines should be written as from that is the base image किछि गोटे base image ऊपर हमें रखिबा धरो म गोटे एग्जांपल तुमको दे दोची क्लियरली तुम बुझी पारिबो सपोज मते गोटे पूरा क्लियरली कोन मोर रिक्वायरमेंट हला गोटे जावा एप्लीकेशंस जेमति हम सब गोटे जावा एप्लीकेशंस ऊपर काम करछे बा मते गोटे पाइथन एप्लीकेशंस डेवलपमेंट करियर अछि राइट तो पाइथन एप्लीकेशन गोटे डेवलपमेंट करियर अछि तो पाइथन एप्लीकेशंस पे मते कोन सॉफ्टवेयर देकर पाइथन शुड बी इंस्टॉल्ड पाइथन लाइब्रेरीज बा सॉफ्टवेयर फाइल्स किछि जाथियो ताको हमें यूज करिबो तो बट एक ही से सपोज मोटे जावा एप्लीकेशन नोचे तो जावा एप्लीकेशंस गोटे वेब एप्लीकेशन सपोज गोटे वेब एप्लीकेशन अछि आ वेब एप्लीकेशन को हमें गोटे कंटेनराइज करिवार अछि वी आर गोइंग टू कंटेनराइज द application right containerize the application so how we'll do it हमें कौन करिया पड़िबो ना तार डॉकर फाइल लिखे हम गोटे इमेज क्रिएट करिया पड़िबो राइट सपोज गोटे जावा आप तक छी त हमको कोन करिया अछि टॉमकैट सर्वर रे डिप्लॉय करिया अछि राइट तो तमे दुईटा वे रे लिखि पारियो यदि टॉमकैट सर्वर तमे चाहू छ ऑफिशियल इमेज यूज करिया पई तमे कोन करिवो ना तार बेस इमेज कोन करिवो फ्रॉम टॉमकैट तार वर्जन जहाँ भी तुम यूज करिया पई चाहू छ से वर्जन ता देबो जदि तुम एटी वर्जन न यूज कल कोन हबो देन के मते आंसर दो जदि मु एटी टैग किछि स्पेसिफाई न कली व्हाट विल हैपन लेटेस्ट नै जो एटा लेटेस्ट नहीं जो तो किछि यदि स्पेसिफाई तो जत्ते बळी भी त मन रखि था गाइस तमे एठी कोन प्रैक्टिस करू छ ठीक अछि तमे छाडी देल तमरो लेटेस्ट नहीं गला तमरो काम होई गला बट रिमेंबर जेतले कंपनी रे काम कर छ यू शुड नेवर लीव इट तमरो जहा वर्जन्स दरकार जो वर्जन दरकार सही वर्जन तमे स्पेसिफाई करिवो यदि स्पेसिफाई न कलो देन इट विल ऑलवेज टेक द लेटेस्ट वन ओके तो हमें स्पेसिफाई कलो फ्रॉम एटला बेस इमेज आ परे हमको जहा करिवार अछि जहा यूज करिवार अछि सिंपल जदि मु टॉमकैट नै गेली तो मते कोन करिवार अछि एटा कोन हमें डायरेक्टली बेस इमेज टॉमकैट यूज करले तो मते फाइल कॉपी करिवार अछि जहा भी कोन एप्लीकेशन डिप्लॉय करिवार अछि एप्लीकेशन कॉपी करी से पाथ को पकेतली तापरे कोन करी यूज करी के रन यूज करी करी कमांड केती एग्जीक्यूट कर दली तापरे हमें वर्किंग डायरेक्टरी को वर्किंग डायरेक्टरी स्टार्ट अप तो हमें सब कमांड्स हमें लिखि परिबा तो इडा हला हमर कोन डॉकर फाइल एटा गोटे वे रे हमें कले तो आ गोटे हेलो मु कहूची पूरा पूरा कहूची हमें टॉमकैट बेस इमेज न यूज करी करी हमें यूज करिया सपोज फ्रॉम द स्क्रैच मते गोटे प्लेटफॉर्म दरकार लाइनक्स मशीन रे मते टॉमकैट इंस्टॉल करिया अछि ता सहित मते एप्लीकेशन डिप्लॉय करिया अछि तो ता पय डॉकर फाइल गोटे डिफरेंट हे जिवो राइट ता पय हमर डॉकर फाइल डिफरेंट हे जिवो केमति जिवो ना एटी सपोज मते गोटे उबुंटू मशीन रे हमर कोन उबुंटू मशीन रे सपोज हमर सर्वर एप्लीकेशन बा एप्लीकेशन ता डिप्लॉय हबो तो मु कोन करबी उबुंटू फ्रॉम उबुंटू किछि गोटे वर्जन दे दबो राइट को वर्जन रो उबुंटू मशीन्स दरकार लाइनक्स मशीन मते आसी गला तो मोर बेस इमेज कोन हे गला वर्तमान उबुंटू तो ता ऊपर मते कोन इंस्टॉल करियार अछि जावा इंस्टॉल करियार अछि टॉमकैट राइट तो जावा इंस्टॉल करिया पई ता पई कमांड हमें यूज करि परबा रन देन कमांड लिखि गिरी हमें जावा इंस्टॉल करिवा जेतु टॉमकैट हमें कोन गोटे टॉमकैट भी
जावा एप्लिकेशन गोटे तो ताकू रन हबा में हमको जावा इंस्टॉल हबा दरकार तो हमें जावा इंस्टॉल करि परिबा नेक्स्ट कोन करि परिबा हमें टॉमकैट जो एप्लिकेशंस अछि ताकू डाउनलोड करिबा राइट ताकू यूज करिकि ता पई कमांड हमें चेक करिबा कोन कमांड डाउनलोड करिया पई हमें हमको दरकार राइट कोन कमांड हमको डाउनलोड करिया पई दरकार तो ता पई हमें यूज करि परिबा देखो एक्सपोज ऐड करि परिबा राइट ऐड करि परिबा तो जहाँ भी रन करि परिबा कोनसी कमांड एग्जीक्यूट करिया पई राइट रन करि परिबा तमे तो ये सब एग्जीक्यूट कला परे कोन होछि ना से हमर पर्टिकुलर जो इंस्ट्रक्शंस रोजी रन हो तो फॉर कोन जावा इंस्टॉल सपोज एटा हम जावा इंस्टॉल कले तापरे टॉमकैट हमको इंस्टॉल करिया पड़िबो टॉमकैट इंस्टॉल इंस्टॉलेशन सरला बा डाउनलोड सरला तापरे किछि कॉन्फ़िगरेशंस फाइल चेंजेस करिया अछि राइट तापरे कोन सोइला परे फाइल कॉपी करियो तापरे कोन स्टार्ट करिवो टॉमकैट सर्वर राइट इते सब इंस्ट्रक्शंस लिखिया पड़िबो राइट तो आम जब डायरेक्ट टॉमकैट इमेज यूज करूचे देन हमको ये जो 3-4टा ऑप्शन बा इंस्ट्रक्शंस अछि हमको यूज करिया को पड़िबनी कारण आम ऑलरेडी टॉमकैट बेस इमेज रे सब अछि जावा इंस्टॉल हेकि थिबो कोनसी मशीन्स ऑलरेडी देरे इंस्टॉल हेकि थिबो राइट तो आम डायरेक्टली विल गेट इट दैट तो सही हिसाब रे हमको देखियो पड़ियो मु कोडा एग्जैक्टली को इमेज हमें तैयारी करछे तो एटा हला तमे तो निजर इमेज क्रिएट करिवो तमरो फर्स्ट कंपनी रिक्वायरमेंट तमे बुझिबो तमरो रिक्वायरमेंट कोन तम कोन डिप्लॉय करिया अछि को एप्लीकेशन डिप्लॉय करिया अछि पाइथन डॉटनेट जावा रिएक्ट राइट किछ भी एप्लीकेशन सही हिसाब रे तुमको चूज करिया पड़ियो तुमको कोन नबा पड़ियो राइट तो नाउ लेट्स मु कोन करबी एबे गोटे सिंपल एग्जांपल्स जो दीटा देछि से दीटा एग्जांपल रे हमें फर्स्ट गोटे एग्जांपल रे हमें बुझी तापर नेक्स्ट एग्जांपल रे मु तुमको पर बुझे देबी ओके तो फर्स्ट गोटे सिंपल इमेज मु गोटे क्रिएट कर गोटे सिंपल इमेज सो बीजी बॉक्स जो हमें देखिथिले बीजी बॉक्स कोन गोटे हमें जानथिले बीजी बॉक्स कोन गोटे स्मॉल टाइनी लिनक्स यूटिलिटी इमेज राइट स्मॉल टाइनी लिनक्स यूटिलिटी ऑफिशियल इमेज बीजी बॉक्स इटा गोटे लिनक्स इमेज गोटे बहुत छोटो लिनक्स इमेज ता केते साइज केते जान जतर तर साइज रहउची 840 kb लेस देन 1 MB नॉर्मल लिनक्स मशीन साइज 300 MB 400 MB रहता है राइट बट इटा ओनली लेस देन 1 MB 840 kb ओनली राइट तो बीजीबॉक्स कोन ता विषय जानिबो गले तमे जदी जीवो एठी कंप्लीट डिटेल्स दे व्हाट इज बीजीबॉक्स so BGBox combines a tiny versions of many common Unix utilities into a single small executable. So, केमती यूज करिबा हमें कंटेनर क्रिएट करिबा by using this. Okay, so let's see आम हिसाब रे गोटे कंटेनर क्रिएट करिबा राइट इमेज आम हिसाब रे गोटे इमेज क्रिएट करिबा तो मु जदी बीजीबॉक्स गोटे इमेज बाबूची बेस इमेज नहीं कि हमर निजर इमेज गोटे क्रिएट करबी तो ता पे मु कोन लिखबी फ्रॉम बीजीबॉक्स ओके तो मु जदी किछि नदली टैग देन कोन होबो ना लेटेस्ट नहीं जिवो तो मु सपोज किछि भी टैग दबार अछि तो मु टैग सेक्शन को गली तो मते को एग्जैक्टली टैग हमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे दरकार देखो ये सब टैग कंप्लीट टैग इंफॉर्मेशंस ताबे अछि लेटेस्ट छेदा बाकी सब नंबरिंग टैग अछि ओके मते सपोज लेटेस्ट दरकार मु जदी specify करूची लेटेस्ट then it is okay if not specifying that's also fine because it will automatically take the latest one okay तो मटी suppose दे दउची गोटे versions 1.37.0 okay 1.37. So this is the version I need okay तापरे कोन करे अछि ए सरला परे मते कोन करे अछि ना गोटे सपोज गोटे कमांड एग्जीक्यूट करे अछि गोटे कमांड एग्जीक्यूट करे अछि तो कोन कमांड मु चाहूची कोन करे पड़िबो राइट सपोज मु cmd यूज कली cmd कमांड ओके यूज करी करी sh सेल रे मते गोटे कमांड यूज करे अछि कोन कमांड यूज करे अछि डेट इटा भी अच्छा पड़े sorry it should be in double quote
single quote भी चलेगा, no problem. Double quote. Okay. So ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କଲି sh date ତ ତାପରେ ଧର ମତେ କିଛି ଅଲଗା କମାଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଟା ପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆର ଦେବି, ବଟ୍ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ। ତ ମତେ କିଛି ଲେଖିବାର ଅଛି, ମତେ cmd ଧର ଲେଖିବାର ଅଛି। କେମିତି ମୁଁ cmd ଲେଖିବି ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମତେ cmd କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ cmd କେମିତି ଲେଖିବ ନା what cmd command does, what cmd instruction does. The cmd instruction sets the command to be executed when running a container from an image. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମେଜ ରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର କ୍ରିଏଟ କରିବା, ରନ୍ କରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ କମାଣ୍ଡଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହବ। ତ ଏଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେବଲ ନାଁ ଦେଲି, ଯାହା ପାରାମିଟର ତମେ ପାସ୍ କରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହବ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବେଶୀ ଦେଇନି ଯଦିଓ ତମେ ସିମ୍ପଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଫର୍ମସ ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଓକେ, nothing, I think no image, okay, no instructions, fine. So ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସପୋଜ cmd ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେବଲ ରହିଲା, ଯାହା ବି କମାଣ୍ଡ sh ହେଲା କଣ ସେଲ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ମୁଁ ଦେଲି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଡେଟ୍ କମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛି କୋଉଠି ବିଜି ବକ୍ସରେ। ଓକେ, ଫାଇନ୍। ତାପରେ ମୁଁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ରନ୍ କମାଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି। ତ ରନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି ରନ୍ କମାଣ୍ଡ, ରନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କଣ ବା କମାଣ୍ଡ କାମ କଣ, ରନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ will execute any commands to create a new layer on top of the current image. On top of the current image it will create new layer. Okay, so ଆମେ ଯାହା ବି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଏଇ ଟାଇପର ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି ହାଲକାରେ ବତେଇ ଦଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଇମେଜ ଫାଇଲ ଗୋଟେ ଲେଖିବା, ତ ଲାର୍ଜ ଇମେଜ ଫାଇଲ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି ନା ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ କଣ କଲି, ବେସ୍ ଇମେଜ ଆଉ ଗୋଟେ cmd କଲି, ରାଇଟ। ତ ଫାଇନ୍, ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥାଉ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଡ କରିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଓକେ, ତ ଆମର ଡକର ଫାଇଲ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲି। କଣ ଡକର ଫାଇଲ, କେବଳ ଦିଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ତ ଡକର ଫାଇଲ ଆମେ ବିଲ୍ଡ କେମିତି କରିବା ନା ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଡକର ଇମେଜ ବିଲ୍ଡ କମାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଇମେଜ ବିଲ୍ଡ କମାଣ୍ଡ, ଦେଖ ବିଲ୍ଡ ଇମେଜ docker image command जो दबा हमें build an image from a docker file, docker file ରୁ ଗୋଟେ image build କରିବା। ତ ଆମେ ତାର examples କେମିତି ଏଠି ଦେଇଛି, build -t ଯୋଉ ଅପସନ ଦବ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ ବା ତା ନାଁ ଗୋଟେ ଦବ ତ, ରାଇଟ। ତ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ଏଠି ସିମ୍ପଲ docker image build, ଓକେ, ତାର -t ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ ଦେଲ। ଓକେ, ତାପରେ ଟ୍ୟାଗ ସହିତ ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଗ ତମେ ଦଉଛ ଟ୍ୟାଗ ର ତମେ ରେପୋଜିଟरी, ରାଇଟ, जो भी स्टोर करेगा तार टैग इनफॉरमेशंस तमे दबो। ओके, तो मु सपोज दउछि एठी रंजीत स्वाइन। ओके, स्लैश सपोज मु कली माय इमेज देन तापर कोन होबा ना एठी डॉट दबो। डॉट माने कोन, करेंट। तो हमको कोन स्पेसिफाई करियर अछि डॉकर फाइल, जो डॉकर फाइल टा हमको बिल्ड करिवार अछि। तो मु एठी आइदर -f ऑप्शन लगे डॉकर फाइल पूरा पाथ रा दे परिबी, नले डॉट लिखले माने करंट डायरेक्टरी जेतु डॉकर फाइल टा अछि से कोन बिल्ड हबो सेटु, राइट। तो मु एबे एटा एंटर देखो से कोन करछि, बिल्ड कला डॉकर इमेज बिल्ड -t टैग दली रंजीत स्वाई माय इमेज। ओके, डॉट जदी भी टैग न दोउछ भी इट्स ओके, my image तमे लिखा है t my image, it will create my image। तो फर्स्ट कौन कला जो इंस्ट्रक्शंस तला दीटा इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो फर्स्ट कौन करिवो से 100 से कौन करछि ना हमर बीजी बॉक्स 1.3.0 को डाउनलोड करछि, जेतु लोकली नाही, राइट। तो से कौन करछि ना डाउनलोड करछि। ता परे हमर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस रहउछि कोन कमांड गोटे एग्जीक्यूट करिवा पई, से कमांड ता एग्जीक्यूट होबो। वर्तमान हमर इमेज क्रिएट हे गेल, हमें चेक करिबे डॉकर image ls, सी हमर वर्तमान रंजित स्वाई माय इमेज लेटेस्ट टैग कोन लेटेस्ट, राइट। हमें किछि टैग स्पेसिफाई करि नथिली, तो से कोन एटी मु किछि टैग स्पेसिफाई करि नथिली, तो एटी कोन हेगला से लेटेस्ट नै गेला, राइट। तो इमेज आईडी क्रिएटेड 4.28 MB। ओके, सो हमर गोटे इमेज वर्तमान कोन
ଏଟା 9 month ago କଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି? ଏବେ ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରିଏଟ କଲେ। Exactly. So କି କହିବ କାହିଁକି ଲାଇନ୍ ମନ୍ଥs ଦେଖଉଛି? ଆମେ actually base image କଣ ୟୁଜ କରୁଛେ? Digibox କୋଉଟା? ଏଇ versions ଟା, right? ତ ଏଇ Right. versions ଟା actually ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ସେଟା last 9 months ago it is created. ओके, जो बीजी बॉक्स आम डाउनलोड कि आम जो इमेज टा आम क्रिएट कले से किसी ना कि रखी आम खाली गोटे कमांड एग्जीक्यूट करें, राइट? आमर आउ किसी लेयर आम ऐड करनी, जब आम किसी आउ नुआ लेयर किसी ऐड करते देन से क्रिएटेड एबे ही था। ओके, ठीक अछि। फाइन। सो बर्तमान आम गोटे इमेज क्रिएट है तो मत इमेज रु गोटे कौन कंटेनर क्रिएट करार अच्छी। तो मुझे कौन करी कौन कमांड यूज हो? डॉकर कंटेनर रन कमांड, राइट? रन देन इमेज नाटा दबा ये टाइम पे से कौन कला कैनॉट ओपन नो सच फाइल और डायरेक्टरीज। तो एठी हमें कौन कले जो एसएच यूज कले तो हमें जो डेट कमांड देइचे, राइट? सो डेट कमांड टा एक्चुअली एग्जीक्यूट होनी, that is a problem, right? So we cannot directly execute the commands, we cannot directly execute the commands. तो हम हमें modify करी आम एसएच देले जे गोटे फाइल स्क्रिप्ट लिखिकी एक्जिक्यूट करता कि गोटे फाइल देता जोटा को एक्जिक्यूट होता, राइट? तो आम कौन कले एसएच डेट देदेले, डेट से कौन लिखुची ना नो सच फाइल एंड से गोटे सेकेंड जो पैरामीटर नौची आम जो सीएमडी देखी, राइट? सीएमडी देखी जस्ट गो टू द सीएमडी देखते कौन एग्जीक्यूटेबल पैरामीटर्स दिया होची, राइट? So CMD extension a Dockerfile. If you list more than one CMD, only last one takes effect. Okay. The purpose CMD to provide defaults for an executing container. This defaults can include an executables. तापर हमर कोन रहउची जहाँ भी तमे executables run करूछ, right? जो params one हेची, right? Executables. तो मु एठी कोन करछ ना जो executables दोची CMD तो मु एठी कोन देइतली sh दे देइतली, राइट? तो मैं टिके मॉडिफाई करूची को एसएच जगह मु कोन करची एटू मु हटे दोची किछि मते दरकार नै, जस्ट प्ले अराउंड। मतलब सपोज एग्जीक्यूटेबल मु डेट रखी देली सीएमडी डेट, लेट्स सी व्हाट इज हैपन जे तुम मॉडिफाई कली कोन डॉकरफाइल एटी देखो सीखो तमे नुआ इमेज केमती क्रिएट करची। एवरी टाइम यू मॉडिफाई द डॉकरफाइल यू हैव टू रीबिल्ड इट, राइट? तो हमको बिल्ड करिया पड़ियो तो मुझे बिल्ड कली बट एटी एबे कौन करछि ना गोटे वर्जन दे दोछि 1 पॉइंट सपोज 0, सॉरी दिस इज नॉट द बिल्ड, दिस इज रन। ओके, तो मैं एटी कौन करछि कोलन 1.0 डन रहगला। तो हमर एबे डॉकर इमेज एलएस माया देखो इमेज क्रिएट हो गला 1.0 टैग, राइट? तो मते वर्तमान आउथरे एग्जीक्यूट करछि से रन करूछि कंटेनर, बट एटी जदि मु रन करबी कोन हो एटी लेटेस्ट नै जीवो इमेज, राइट? तो मते एटी स्पेसिफाई करबो 1.0 को मु स्पेसिफाई करे। सी देखो एटी कोन कला हमर डेट सो कला जति कि फर्स्ट हमर कोन अछि you should give executable, right? तो मु executable देइतली sh, that's fine, that is for the shell prompt, right? Shell command to execute the shell, but second parameter टा मु date देइतली जोटा कि से ट्रीट कला as a parameter, normal parameter, not executables. The first one is the command cmd prompt जो instruction अछि, the first parameter should be the executables. तो मु एठी कोन देइतली से कोन कला ना गोटे कंटेनर क्रिएट कला, उसे कंटेनर को एग्जीक्यूट करिकरी ए डेट मते शो कला, राइट? तो आमे देखिबे एठी हमर बर्तन केतेटा कंटेनर क्रिएट हेतो की कहयो मते
देखो डॉकर कंटेनर रन करिकि आमे कोन कंटेनर तुमको पचारे क्वेश्चन हाउ टू क्रिएट ए कंटेनर बाय यूजिंग डॉकर कंटेनर रन कमांड and providing the image we can create the container so आमे जो ए एग्जीक्यूट कले तो एटी कोन होबे टी क्रिएट कंटेनर गोटे क्रिएट करथियो तो कंटेनर रो जहा काम से काम सरला पर कंटेनर बेसिकली कोन होबे एग्जिट हे जिवो राइट कंटेनर बेसिकली एग्जिट हे जिवो तो आर काम थिला कोन ना केवल डेट टा एग्जीक्यूट करिवो डेट एग्जीक्यूट कला तापरे कोन एग्जिट हे गला राइट देखो कटी किछि नाही तो ये कौन डॉकर कंटेनर एलएस मार्च जोटा कि रनिंग कंटेनर कौन सी कंटेनर रन होनी मदि हाइफेन ए मारिबी तो हमर दुईटा कंटेनर क्रिएट तो फर्स्ट जो हम एग्जीक्यूट करथिले देखो सेकंड एग्जीक्यूट आउ तापर देखियो कंटेनर ना सब अलग अलग अछि कोन पय अलग अलग अछि हमें ऑलरेडी जानि छे कोन पय अलग अलग अछि डॉकर डॉकर ताको नेम देछि कहला डॉकर ताको नेम देछि हम जेतु मेंशन किछि नेम करनथले एग्जैक्टली सो जेहेतु आमे किछि ना मेंशन करिनी राइट नेम मेंशन करिनी तो डॉकर विल ऑटोमेटिकली रैंडमली सिलेक्ट ए नेम एंड गिव टू इट ओके हमें किसी नेम स्पेसिफाई एटी करि नथले मैं खाली रन कमांड यूज करिकरी तो ना गोटे ना दबा हेले हमें हाइफेन हाइफेन नेम यूज करतांते हमें किछि किछि यूज करिनी राइट तो बर्तमान मु कोन करछि देखो हमर दीटा कंटेनर क्रिएट हैला बट कंटेनर काम जहां भी कमांड देखो एटी दिला sh डेट एटी खाली डेट कमांड तो ई कमांड एग्जीक्यूट हे गला परे कंटेनर हमर कोन एग्जिट हे गला सपोज मु आउथर मॉडिफाई करछि कंटेनर इमेज फाइल को ओके मु डेट जगह रे स्लीप लिखि दोछि स्लीप कॉमा suppose मैं लिखि दोछि 120 seconds okay fine so मते आउटे बिल्ड करियको तो सो लेट्स बिल्ड इट ओके तो बिल्ड करिके मु कोन करबी नवा वर्जन गोटे दे दोछि 1.1 डन नवा इमेज बिल्ड हे गला राइट डॉकर इमेज ls sorry डॉकर इमेज ls so 1.1 राइट तो मैं बे एग्जीक्यूट करिवा देखिवा कोन होछि 1.1 देखो तो वर्तमान कोन हला हमर कमांड आमे देतले स्लीप कमांड ता सहित पैरामीटर पास करतले 200 स्लीप हला कमांड पैरामीटर पास करतले कोन केते सेकंड पास करतले 120 or 200 something right 120 so वर्तमान 120 seconds ये कोन स्लीप कला तो आमे जदि देखिबा वर्तमान ए पर्टिकुलर ओके बट एग्जिट कर दो सी मार दो कंट्रोल सी मार के पळे आछी जब तक एग्जिट 120 seconds पड़े से कौन हम ना ऑटोमेटिकली कंटेनर हमरो एग्जिट हे जिवो तबने 120 seconds means हमर 2 minutes around right 2 minutes after 2 minutes it will get तो एटी कोन डिफॉल्ट कौन otherwise सब दिस by default interactive to मोड रे हमें कोन नॉर्मली कोन करथले जे फर्स्ट कंटेनर क्रिएट कले एग्जीक्यूट कला ऑटोमेटिकली एग्जिट हे जाउतला त काम सरला पर से एग्जिट हे जाउतला बट एटी से कोन हला ना स्लीप फॉर 120 seconds स्लीप एग्री रहल तमाने हमर कंटेनर ता रन होथियो वर्तमान ओके तो आमे जदि भी चाहिबा तो आउ गोटे जस्ट लॉगिन करके भी देखि परबा गोटे टैब को आमे जदि कनेक्ट करिबा this is a channel right let me log into this
Okay. So do you want to make it a Docker container less slow ହେଇଗଲା system. Okay. ତ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି Docker container ls aim ଆଉଛି ଦେଖ କଣ sleep 120 seconds କଣ exited ହେଇଗଲା 2 minutes ago right ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ଡିଟାଚ୍ ମୋଡରେ ଆଉଥରେ ରନ୍ କରି ତମକୁ ଦେଖଉଛି ହାଇପେନ୍ ରନ୍ କଲି ଏଠି ହାଇପେନ୍ ଡି ଅପସନ୍ସ ୟୁଜ କରିଦେଲେ ଡିଟାଚ୍ ମୋଡରେ ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ କଣ କଣ୍ଟେନର ଆଇଡି ଦେଇଦେଲା ଆମକୁ କଣ୍ଟେନର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା କଣ୍ଟେନର ବଟ୍ 3ଟା କଣ୍ଟେନର ଏକ୍ସିଟେଡ୍ ଥିବ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଯେହେତୁ ସ୍ଲିପ୍ ଅଛି ସେ ଅଫ୍ ଥିବ ରାଇଟ୍ ଲେଟ୍ସ ସି ଦେଖ যেহেতু স্লিপ 120 সেকেন্ডস রন ଅଛି বটন কন্টেন্ট কারণ এই কমান্ডটা এক্সিক্यूट করিয়ে কমান্ডର বিহেভিयर ହେଲା କଣ ନା ସ୍ଲିପ୍ ହବ for 120 ସେକେଣ୍ଡ ତ କଣ୍ଟେନର ଆମର ତ କଣ୍ଟେନର କାମ ସରିଗଲା ପରେ କଣ୍ଟେନର ନର୍ମାଲି ଏକ୍ସିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ରାଇଟ୍ ତ ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବେ କଣ ଆମର କେମିତି ନିଜର ଇମେଜ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ତା ଉପରେ କଣ୍ଟେନର ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମୁଁ ବତେଇଦେବି ତମକୁ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆପାଚି ସର୍ଭର କରିବା ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡେପ୍ଲୟ କରିବା ୱିଥ୍ ଅଦର କମାଣ୍ଡସ୍ ରାଇଟ୍ ତ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ଚେକ୍ କର ରେଫରେନ୍ସ କେମିତି କାମ କରୁଛି କଣ କଣ କମାଣ୍ଡସ୍ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଆର ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି କମାଣ୍ଡସର ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ବତେଇଦେବି ଇଏନଭି ଏକ୍ସପୋଜ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହଉଛି କପି ଫାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟରି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମକୁ each and everything I'll explain clearly by creating multiple images तो हमें कौन करिबा बहुत सारा images create करिबा Apache Tomcat गोटे applications deploy करिबा right तापय हमको बहुत सारा docker file लिखिबार अछि तो आउ next class रे हमें कौन करिबा complete docker file ऊपर काम करिबा तापर हमें docker compose को जिबा okay that's all guys for today's class anything guys କିଛି ଡାଉଟ୍ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା otherwise that's fine we'll meet tomorrow okay